Assalamu alaikum, dear students. I welcome you uh, in this offline class. My today's class is for 10th, and today our topic is Out of Business. It is written by R.K. Narayan. Yeah, we can. His full name is Rasipuram Krishna Swami Narayan, a highly acclaimed author who was born in Madras, now Chennai. So, his first novel was Swami and Friends. So you can read about the author. It's in your book. So the moral or the theme of this story is that should we follow shortcut methods in life to solve our problems, we need to maintain our cool and fight out the crisis. There is no substitute to hard work. इट पेज इन द लॉन्ग रन, यानी हमें वो शॉर्टकट मेथड्स नहीं करने हैं यूज ज़िंदगी में कि हम रातों रात अमीर बन जाएं. तो that very often ruins our career, our everything. We look for shortcut methods to become rich overnight. We should remain cool. We should it is said slow and steady wins the race. So I'll give you a brief summary of this lesson, एंड आई टेल यू कि आप इस लेसन को घर में पढ़ें पूरी तरह से, क्योंकि इन वीडियोस में तो हम उतना हमारे पास ये नहीं है, ये 2G का ये है चक्कर है, तो इसलिए हम पूरा इसको लेसन को नहीं पढ़ सकते और इट विल टेक मच टाइम. तो मैं इसकी ब्रीफ समरी आपको देता हूँ. दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए पर्सन whose name was Ramarao, who loses everything in his business. He tries to find some employment in the town, but in spite of his best efforts, he fails to find any. He has only a little money with him. Very soon, it's also all exhausted. He rents out his bungalow and moves with his family to a poor locality. This rent is the only source of income for the family now. One day, as usual, Ramarao goes around the town to find some job. Having failed to find any, he walks into a library in the town. There he comes across a journal. It has only crossword puzzles. It offers a big prize of 4,000 rupees for the winners. Ramarao is tempted to try his luck. He has to invest 1 rupee to send his entry. He gets it from his wife and sends his entry. But when the results are published, Ramarao fails to win any prize. He decides to try his luck once more. The same thing happens week after week. He keeps sending his entries but never wins any prize. Meanwhile, the family becomes more and more hard up. But Ramarao seems to have become indifferent to his wife and children. He gives all his time and attention to think of the solutions to crossword puzzles. His wife feels disturbed, but she's a very mild lady. She doesn't want to quarrel with her husband. She hardly ever protests. But once the journal offers a huge prize of 8,000 rupees. This time, Ramarao does not want to leave anything to chance. To his mind, there are only 4 doubtful answers in the puzzle. So he decides to send 4 entries this time. His wife is shocked when he demands from her 5 rupees to send the solutions, but there is no way out for the poor lady. The results are announced after a week. Ramarao anxiously goes through the pages of the journal. There is no trace of any prize for him. Ramarao can't bear this shock. He decides to end his life on the railway line. Ramarao walks a few miles from the town. He goes along the railway line. The train is due in few minutes. Ramarao lies down across the line and begins to wait for the train. He keeps lying for quite some time. Then he gets up and walks to the railway station. Then he comes to know that the train has been held up due to an accident. Now Ramarao realizes how kind God has been to him. He walks back home. It's quite late into the night. His wife is waiting anxiously at the door. She gives him a very warm welcome. She takes him in and brings food for him. She also tells him that their tenant has come in the evening. He wants to buy their bungalow and is prepared to give a good price for it. It comes as a
big relief to the Rama Rao. He says that he will take with him only a little money and go to Madras. There he would find some useful job for himself. He also swears that he will never again invest any money in the crossword puzzle. So we come to know that Rama Rao, after losing his after getting a setback in his business, so उसके पास कुछ बचा नहीं, उसका बिजनेस फेल होता है, उसको बहुत बड़ा खसारा आता है. तो उसके बाद उसकी जो वाहिद इनकम होती है वो बंगला अपना रेंट पर देता है. तो जो कुछ उससे आता है उसी से वो गुजारा कर लेता है. तो उसकी ज़िंदगी डे बाई डे यानी सख्त होती जा रही. तो अचानक एक दिन वो नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है. तो एक दिन वो एक लाइब्रेरी में पहुंचता है. तो वहाँ वो कुछ अखबार में देखता है, वो क्रॉस वर्ड पजल्स आती थी जिनका हमें वो आंसर देना होता था. तो इसी तरह से उस पर एक 4000 रुपीज़ का इनाम होता था. तो उसके दिल में एक उम्मीद सी जगी. उसने कहा कि चलो छोटा सा ये है तो मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है इससे ये मैं जीत जाऊँ, मेरे नाम प्राइज़ निकल आए तो मेरी हालत सुधर जाएगी. लेकिन वो उसके लिए 1 रुपये भरना पड़ता था जवाब भेजने के लिए. तो उसने कई बार ट्राई की लेकिन हर बार उसके नाम कोई इनाम नहीं आया. तो एक बार उसमें इनाम को डबल कर दिया गया. तो उसने अब उसको 2-3 एंट्रीज भेजनी थी, 4 एंट्रीज इनफैक्ट. तो उसने सोचा कि अब की बार मैं कोई चांस नहीं लूँगा, तो 4 में से तो एक ठीक होगा. तो उसके लिए उसने डिमांड की अपनी बीवी से 5 रुपए की. तो उनके लिए 5 रुपए देना उस वक्त बहुत दुश्वार था उसके पास, लेकिन चूँकि वो एक कूल लेडी थी तो उसने दे दिए. तो जब उसने जवाब भेज दिए तो अब की बार भी उसको कोई ये नहीं आया, कोई प्राइज़ नहीं आया. तो इससे बहुत मायूसी हुई, उसको बहुत परेशान हो गया. तो अब उसने सोचा कि नहीं, दरअसल मेरी किस्मत ख़राब है. उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करूं. तो इसके लिए उसने वो रेलवे ट्रैक पर गया. वो बड़ी देर तक लेटा रहा. ट्रेन के टाइम आने का वक्त था. ट्रेन के आने का वक्त थोड़ा सा लेट हो गया, 1 घंटा या कुछ. तो वो उठा और रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया. तो वहाँ से इंक्वायरी उसने की कि क्या बात है, ट्रेन क्यों नहीं आई. तो उन्होंने कहा कि ट्रेन आज लेट है कुछ घंटे. तो उसने सोचा कि नहीं, दरअसल ये गॉड की तरफ से इशारा है, गॉड वांट्स टू सेव माई लाइफ. तो उसने इसको एक इशारा लिया तो वापस चला गया घर. घर में बीवी ने उसका अच्छे से खैर खुश आमदीद किया, उसको फोड़ दिया, उसको बाकी चीज़ें दी और साथ में ये खुशखबरी सुनाई कि हमारा टेनेंट जो है वो बंगलो ख़रीदना चाहता है. तो इसके दिल में एक उम्मीद सी जगी कि जो पैसे आएंगे तो उससे हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकेंगे. तो एक वक्त था जब वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन अब वक्त आया कि उसके दिल में एक उम्मीद फिर जगी. तो उसने शॉर्टकट मेथड चाहा था, लेकिन ऐसे नहीं हुई. तो लक की बात होती है, किसी वक्त होता है, किसी वक्त नहीं होता है. तो इस तरह से वो रामा राव को कि हम किस्मत में बचना था और फिर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना था, अपनी ज़िंदगी आगे लेनी थी. तो उसको एक मौका मिला तो उसने वो मौका हासिल किया. थैंक यू.